enhancing the seed replacement rate okay, of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what is the constraint in its wider greater implementation? What are constraints particularly? It is regarding your food and nutritional security of India. Food and nutritional security of India. First, there is no national seed policy in India. No national seed policy in India. There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of the horticulture crops. ए statement wrong मुदुची आगे पढ़ी देवा. There is a demand supply gap of regarding quality seeds in case of low value and high volume crops. Yes, this is correct. Correct answer किए बात करें दूच कहीं की मोटी बात चली कि this is again the question is regarding related to the food and national security policy and national security of India. Seed replacement policy यदि हम देखिबा कि national seed policy is there. National seed policy is 2002 is there. Second, there is no participation of private sector seed companies in the supply of quality of seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops. This is a wrong statement. There is a participation of your private companies, private sector companies. Because of them, they are supplying, they are helping the governments in producing your hybrid quality of seeds particularly. But samane jo korchon that is in a very particularly hybrid quality of seeds that they are supplying to the government, but in a very meager quantity, fewer quantity. All farmers cannot avail such total the quality of foods. It is because of they're keeping the price margin bit higher. Government is simplifying because of we are changing the national seed policy in a very broader manner, and things are be examined and things can be upgraded in the coming time. So we are expecting that government should look into all these things. These are the bottlenecks. Jaldi remove. We are expecting that one. Third statement is correct, but it is a demand supply gap regarding the quality of seeds in case of low value and high volume crops. Yes, it is absolutely correct. Hence, only 3 is correct. देखिए अभी तो answer था. Answer is B for Bombay. 58 number question देखिए. Hello sir. Yes. Sir, के खाली screen टा zoom करिवे आउ टिके. Zoom करबी. No, it's okay. नले सेटा नीचे कर दियो हे जिवो. ठीक है जी. Yes sir हे गला. हेले ना इस जूम टा जो ऑप्शन टा अछि ना मैडम आपनकर जो फोन रे भी ना आपनकर रिक्वायरमेंट अनुसार भी माने टच पैड रे देखिबे राइट साइड आई डू नॉट नो डिफरेंट फोन रे आईफोन रे अलगा प्लस रे अलगा सबुत्र अलगा आपन सेटा मार दियन तो आपन को बेटर रहइबो आपन सेई अनुसार एडजस्ट कर परिबे हेले. अच्छा 58 नंबर देखिबा. ओके. Which of the following is the chief characteristics of mixed farming? Cultivation of both the cash crops and food crops, cultivation of 2 or more crops in the same field, rearing of animals, and cultivation of crops together. None of this. The best suitable answer is C. Rearing of animals and cultivation of crops together. Crops and your animals rearing as well. These को भी same कहा जाए जोटा कि mixed farming रहला same characteristics है ना mixed farming रहला. Next question देखिए. With reference to the Indian agriculture, which one of the following statement is correct? Here Vitru, about 90% of the area under pulse is in India is rain-fed. CA 126 General Studies Indian Geography, particularly it is eta hela tomar bhul pade siremi. ठीक है जी. Rain-fed CA is rain-fed CA 120 General Studies. This is just ignore this line, might be an printing error. Okay. Next, the share of pulses in the gross cropped area at the national level has bounded in the last 2 decades. India accounts for about 15% of the total area under the rice cultivation in the world. Because rice occupies 34% of the gross cropped area of India. Abhi through
correct statement जदि देखिबा about 90% area under the pulses in India is rain faded. 59A is correct. Hela, to be more elaborated, let's see the answers. Take elaboration देखि देबा. एडी जदि देखिबा 59 रे A statement कहूची correct at the time of hela question answer 12.7% in 2011-12 it was 16.1% area pulses under agriculture and facilities for irrigation. Rest area under the pulses cultivation is rain faded. ठीक है? So approximately 90% देइछि that we can assume it is incorrect. So the statement 1 is almost correct. If you look at the agriculture of 2 decades, that is 1990 and 1991, the area under the pulses agriculture was 246.62 lakhs. है? Area under the pulses agriculture जो देखिए, whereas it is reduced to 228 lakh hectare 2004 थिला and 228 million hectares in 1920 रे थिला, while the present is 3.56 near about. It has reduced of the rice cultivation in the top 10 rice producing countries in the world. Of course, India is the top 10 rice producing countries in the world, but world रे वर्तमान जदि quarter of rice हला India. ठीक है? So done in India. So statement 2 is not correct, which says that the share of pulses in the gross cropped area has doubled in the last 2 decades. Particularly last 2 decades से कौन है कि share is doubled है particularly. India accounts about 29% of the total area under the rice cultivation of the world. ठीक है? 29%. So the statement 3 is wrong. Statement 3 रे कौन देला कि 15%. हला actually 15 no. India accounts for 29% of total area rice under the your cultivation in the world. हला और near about हमें 30% धरिबा approximate. जोटा कि अधा दे से जो statement 3 is wrong. Then rice occupies about 23.7% or 24% we can say in a full integer approximate of the gross cropped area in India, not 34%. Thus statement 4 is wrong. So it is the last rice occupies 34%, actually 34 no, it is 24 approximate of the gross cropped area. So statement 4 is also wrong. Only 1 is correct. A is correct. 60 question, which of the following is best describes the main objective of the seed village concept? Seed village concept called main objective seed village ro. Seed village concept कौन देखिए? Encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. Involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at the appropriate time and affordable cost. Okay. Earmarking some villages exclusively for the production of certified seeds. Identifying the entrepreneurs in village and providing them technology and finance to set up seed companies. Okay. Identifying the entrepreneurs in village and providing them technology and finance to set up seed companies. Okay. ठीक है? अभी जो देखिए बेस्ट जो दी सीड विलेज कांसेप्ट हम देखिए सीड विलेज कांसेप्ट रे एटा ही तमरा बी इज करेक्ट इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ द हैला क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयरबाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी ऑफ सीड्स टू अदर एट appropriate time and affordable cost. एटा ही मेजर ऑब्जेक्टिव सीड विलेज कांसेप्ट मन रखो गवर्नमेंट एना जो कहूची ए भितर कोन होची आत्मनिर्भर हैला गोटे चासी को सेल्फ रिलायंट बना हो मन रखा वर्तमान इंडिया रे जो भी प्रोजेक्ट सब बना होची इट इज सेल्फ रिलायंट कांसेप्ट रे सब जिंस होची हैला माने सेल्फ डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट ठीक है सीड प्रोडक्शन एंड देयरबाय मेक अफोर्डेबल क्वालिटी सीड्स एंड अदर अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट. सो बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट. देखो ये सब क्वेश्चन जेतले तमे पढुछ जदियो माने पर्टिकुलरली ज्योग्राफी हला सेही भलिया कि मैक्सिमम बहुत डाइवर्स एंड करंट रिलेटेड बहुत डायनामिक सब्जेक्ट. तो ई तीन सर कोई भी सपोज गोटे जिंस तमे हठात किना मने पडनी तमे क्वेश्चन पढुछ से केस रे मु कोन कहबी
particularly 100% concentration रखियो हला जोटा तुम माने पढिछो तुम देखियो संगे संग तुमर मन पडिवो हला विथ ए काम माइंड एंड प्रॉपर कंसंट्रेशन तुमको माने जोटा कि सबुठ बेसी अपीलिंग हबो माने अपीलिंग इन द सेंस ऑफ रैशनैलिटी हला तो गो फॉर दैट वन ए जो चारटा चॉइस देछि चारटा चॉइस रे सब जंग कहीं भी माने हमें कहा को भी हमें टोटल गलत कहि परिबनी बट द बेस्ट अमंग दैट वन इज योर बी फॉर बॉम्बे 61 देखिबा which one of the following sets of condition is necessary for the good cultivation of the wheat है cultivation of the wheat जदि हम देखिबा किया भितरु good condition for the cultivation of the wheat moderate temperature and moderate rainfall, high temperature and heavy rainfall, high temperature and moderate rainfall, low temperature and low rainfall. सब जगह भूल. It is moderate temperature and moderate rainfall, particularly. High temperature तो कभी भी नहीं, low temperature कभी भी नहीं. It is moderate temperature and moderate rainfall. है ना? कहीं की मते कहि परिबो. Wheat पाई को टाइप रो climate particularly दरकार हुए. जो segregation करा है ची as per the climate. Yes. Wheat is a which kind of crop? Tropical crop, ki Siberian crop, ki tundra crop, ki co crop? Yes. Tropical. Tropical. Yes. Rest others. Tropical. Concept puni. Tropical crops. Wheat is basically a temperate crops. Yes, sir. ना अधिका गरम ना अधिका ठंडा मन रख कांसेप्ट सबले स्ट्रांग रखंदु इट इज द टेम्परेट क्रॉप्स हला टेम्परेट क्रॉप्स कोन होबा प्लीजिंग टेम्परेचर नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड हला हेंस विथ इट इज लिखले मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल नेक्स्ट सर डेजर्टिक एरिया रे डेजर्ट एरिया केमति रहइबो राजस्थान में तुम जो जिनसटा भाबुच राजस्थान जो हुए सेटा आरावली रे एपट को हुए हला सेमी एरिड रीजन रे हुए जोतरे कि तुमरो पर्टिकुलर माने तुम जदि देखिबो नॉर्दर्न राजस्थान रे हुए माने नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान रे जोटा कि तुमरो सटिक अछि हरियाणा और पंजाब आडको हला काहे कि सेही जगह तुमरो रेनफॉल पाए टेम्परेचर भी एडिक्वेट थाए माने आई मीन योर टेम्परेट टेम्परेचर थाए हां कोन तो सर जो माने हमर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आसे जो व्हीट क्रॉप में पंजाब हरियाणा एरिया रे फ्रूटफुल माने ता पे भलो हुए ना सेटा हाँ निश्चय निश्चय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ही तो इंडिया रे हमारा व्हीट कल्टीवेशन नहीं भलो हुए अदरवाइज दोज एरियाज तो समान तो नॉर्थ ईस्ट मानसून रोटेटिंग मानसून वर्षा पाइनी इंडिया रे केवल गोटिए जगह वर्षा जो रोटेटिंग मानसून हुए दैट इज योर तमिलनाडु कोस्ट हला एपट एरिया जो वर्षा पाउछ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड दैट इज व्हाई योर Punjab, Haryana, and Western UP and parts of northwestern Rajasthan, they are getting your good amount of rainfall with your winter temperature that is very conducive for your wheat growth. এই যুগে তো wheat চাষটা ভালো हुए এই যুগে ঠিক আছে ম্যাডাম ওকে নেক্সট দেখিবা ওকে next the ideal climatic condition for the cultivation of rice are दीटा के पूरा अलग अलग व्हीट देला एपटे राइस रे कोन हो रेनफॉल above 100 cm temperature above 25 degree centigrade cool and moist climate for the entire crop period बिल्कुल गलत रेनफॉल below 100 cm and temperature below 25 बिल्कुल भी नो warm and dry climate during the entire crop period ठीक अछि वर्तमान मु दीटा को चॉइस के लिए मु आउ ए आउ डी भितरे मु टैली करछ कि या भीतर बेस्ट आंसर कोठा हो ये भी सर हां यस हमें केमती कोन करबा एटी दिछि वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग एंटायर क्रॉप पीरियड बिल्कुल ठीक किंतु एटी कोन दे देला स्पेसिफिक दे देला रेनफॉल above 100 cm and temperature above 25 degree centigrade तो एटी यदि देखिबा दीटा इसके भीतर कंपेयर करबा ए इज करेक्ट सपोज परीक्षा रे सपोज एई क्वेश्चन डा परीक्षा तमर पढिछि आउ एटा बिल्कुल भी देइनी माने एटा अलगा टाइप रो देइछि देन सपोज नन ऑफ दिस देइछि हैला तमे कोन करबा भितरु यू हैव टू चूज दिस वन
questions वर्तमान केमती आसुची prioritize माने you have to prioritize 1 prioritize 2 as per this priority 1 2 भितर 1 को choose कला जदि एटा suppose एटा नाही एग्जाम रे देनी you have to choose the this one है बार बार कुछ prelims is all about the tricks. It doesn't matter that how is and one is adequate with all the total knowledge. It matters how one is very much skilled to eliminate the questions and to resolve to get the target. है ना सब बड़े intelligently बहुत दिन से करिया को पड़े. Okay, ठीक अच्छी. Next question देखिए. 63 assertion and reasoning. The eastern coast. Okay, the eastern coast of India produces more rice than the western coast. Absolutely correct. Then reasoning, the eastern coast receives more rainfall than the western coast. Eastern coast receives more rainfall than the western coast. बिल्कुल भी no. तो ये जाना पड़ची. Statement A is correct, R is false. Answer is C. ठीक है इंडिया रा मन रखंतु पश्चिम भागटा हैला अरेबियन सी ब्रांच जोटा गछ वेस्टर्न कोस्ट बेसी वर्षा पाए देन द ईस्टर्न कोस्ट मन रखंतु एटी सबुटु बड़ Yes, जिंस sir. कोस्ट दे दीची हियर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन द कोस्ट हैला नेक्स्ट 64 choose the correct answer, choose the correct sequence of the states of India according to ascending order of rice production in the year 2018-19. Hello? Correct sequence of the states of India according to the ascending order of rice production. Rice production jota achi ki ascending order re year 2018-19. I think mane 5 years back, right? Okay, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, rice production re. Rajasthan, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan. Then Rajasthan, it is the bilkul bhi ascending order je to dechi in production in the ascending order. Okay, Punjab, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh. या भितर देखंतु एटी सब संग भूल ई ऑप्शन टाइ हबो माने एक एबा क्वेश्चन एटी जो देछि क्वेश्चन रे एटा टिके हम इग्नोर करिबा बिकॉज़ 2018 19 ऊपर बट मन रखन जदि हम देखिबा असेंडिंग ऑर्डर रे ताले एटी मु कहूची जदि सपोज उत्तर प्रदेश जदि हम देखिबा सबटु बेसी हबो हला ता परे ता आगु को पंजाब रहिबो ठीक अछि सो जदि हम देखिबा देन एटी हरियाणा ही कम एटी जदि देखिबा राजस्थान हरियाणा पर्टिकुलरली ठीक अछि मध्य प्रदेश ऊपर पंजाब और उत्तर प्रदेश जदि देखिबा जैसे as per the recent data your Punjab is there ये देखि लेबा 61 एटा थिला 61 नंबर क्वेश्चंस बोले 64 sorry according to the figures agriculture 2020 5 rice producing states है पर्टिकुलरली जोटा कि वर्तमान दे दीची वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब आंध्र प्रदेश ओडिशा है तो सेटा को इग्नोर करंतु वर्तमान करंट डाटा हिसाब रे हमर वेस्ट बंगाल नंबर 1 है सेइथरे तमर देन उत्तर प्रदेश देन पंजाब है एटा हम जो कहथि उत्तर प्रदेश देन पंजाब देन आंध्र एंड ओडिशा ओडिशा 5th रैंक रे अछि एटा मन रखंतु है नंबर 1 इज योर वेस्ट बंगाल नंबर 2 योर उत्तर प्रदेश नंबर 3 पंजाब 4 आंध्र प्रदेश 5th ओडिशा है प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस वेस्ट बंगाल आरंभ होची उत्तर प्रदेश पंजाब आंध्र एंड ओडिशा 5th नंबर 65 number question देखिबा with reference to the cultivation of kharif crops in India kharif crops in India in last 5 years consider the following statements ki last 5 years area under rice cultivation is highest absolutely correct area under cultivation of the jowar is more than that of the oil seeds okay please ignore this one
is more than oil seeds, then area of cotton cultivation is more than that of the sugarcane. ठीक है then area under sugarcane cultivation has steadily decreased. एटा तो भूल बिल्कुल cotton sugarcane ही बेसी अछि. Area under area is cotton cultivation is more than that of the sugarcane. बिल्कुल भी नहीं, sugarcane ही अधिक है, बेसी जगह नहीं है. And area under cultivation of jawar bullet, एटा भी भूल, कारण oil seed टा बेसी नहीं India. Area under sugarcane cultivation has steadily your decreased. Yes. ହେଲା तो आंसर इट जदि हमें देखिबा गुड सेकंड एटा केते नंबर क्वेश्चन है 65 this one is correct हैला this one is our oil seed is अधिक है ठीक है this is also wrong हैला cotton cultivation is more than that of the sugar cultivation good second cotton cultivation or sugar cultivation जदि हमें नबा हैला that is yes मु टिके उल्टा कहि this is also correct area under sugarcane cultivation has steadily decreased हैला this is wrong it is steadily increased हैला काहे कि वर्तमान देखा होची कि हमर जो sugarcane ता वर्तमान टिके साउथवर्ड शिफ्ट होची हैला नॉर्थवर्ड न जाएंगे साउथवर्ड शिफ्ट होची बिकॉज़ साउथवर्ड शिफ्टिंग रे बहुत सारा रीजन अछि प्रथम रीजन है कि तमरो because of the your fructose content and since your sugarcane needs your highly tropical humid crops your temperature is also very much needed and that is why because of your abundant sunshine or exposure to the sunshine that enhances your fructose quality and that is why there is an your shifting of sugarcane cultivations more to the southern India or southern part of India, southern peninsula than the northern peninsula. So steadily increase it, decrease होगा sir sucrose sir fructose no sir sucrose okay ठीक है नहीं ठीक अच्छी सर मुझे यदि कहबी कि सुक्रोज कारण सुक्रोज और फ्रुक्टोज भितर फरक कौन की सर कोटा बेसी रथ है सर कोटा बेसी रथ है फ्रुक्टोज ना सुक्रोज fructose ta sir ho फ्रुक्टोज है ना दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी केम इन यूपीएससी फ्रुक्टोज कंटेंट है रॉ कंटेंट है ठीक है फ्रुक्टोज परे सुक्रोज आसीबो है ना अच्छा next देखिबा 66 number questions consider the following statements हाँ 80 66 67 है पढ़े हाँ 66 देखिए 66 सी देखिए consider the following statement India is the original home to the cotton plant yes absolutely correct cotton amari है original home to the cotton plant India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety leading to the increased production hybrid cotton yes ठीक है both 1 and 2 are correct original home to the cotton में इतने कभी cotton plant प्रथम Egyptian cotton अच्छी Egypt सेमती इंडिया रे हमरो प्रथम है हमर जो देखिबा कि इंडस वैली रे ही प्रथम हमरो सेती cotton भी होइतला one of the there are few civilization who have started the cultivation of cottons among that Indus civilization India रे भी सेटा भी हमरो their home to the cotton को है and that is your this is correct first country in the world to develop hybrid cotton बिल्कुल है a few years back you all have remembered when our textile minister Miss Priti Irani madam was there you were promoted your kasturi cotton as Indian brand cotton है ना kasturi cotton India रो brand world trade से promote करते हैं and it was has an very demand in your world market also ठीक है तो both are correct बहुत कंटेम्पररी क्वेश्चन गुडा दोची मु सेही जो कहे जो माने क्लास रे मु बार बार लास्ट 7-8 इयर्स ऑफ मु कहि आसी जो माने पेपर पढुचो से माने का एडवांटेज प्रीलिम्स रे बहुत देखता देखो मैक्सिमम ज्योग्राफी इतने डायनामिक सब्जेक्ट जो माने माने पेपर ऐसु सब जगह देखो एटा करंट अफेयर्स रिलेटेड मैक्सिमम करंट अफेयर्स रिलेटेड एंड दोज हु आर इन टच विथ द करंट अफेयर्स माने न्यूज़ पेपर डेली पढुचो देखो सेम जिंस तुम 85 है ना so I see my job is to as a trainer as a coach my job is to highlight कि को जगह तमे फोकस करिवो it is all about the tricks exam जो बाहर करा जो it is all about the tricks that how you are focus
instead of studying in a vast thing, if you if you check out these are the areas, now I have to focus on this one and focus 100% focus karo, tapare definitely will get the result. Hala, consistently, hala, 7-8 years ago, and those who follow this one, definitely success is there. 67, in fact these things are help you in your mains also, that is very much sure, I'm telling that one. 67 number questions, the correct sequence in the decreasing order of the 4 sugarcane producing states in India. पुणी एटी पढ़ला बेले सब कौन दो हाईलाइट कर दो, पेंसिल जदि धरिच सेटा कहि दो, ठीक अछि। करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर मन रख, सब एटी मुंडली बुले दो, क्वेश्चन पेपर लिखला बेले फटकिना मुंडली, कारण सेई समय माइंड एते फास्ट जाए, हमें संगे संग उल्टा देखि दो हला, से माने चालाकी में संगे संगे डिक्रीजिंग कर दै छै। ऑफ द 4 sugarcane producing states in India, कौन हो डिक्रीजिंग ऑर्डर रे? महाराष्ट्र, यूपी, एठी भूले गेले क्रॉस करछु, यूपी के एटा मु होल्ड करली, पुनी महाराष्ट्र, यूपी एठी भी भूले गेले, देन एटा माने मु बी और डी भीतर कंफ्यूज, कारण यूपी नंबर 1 देन महाराष्ट्र हला। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रे जदि हम देखिबा तमिलनाडु आगे अछि, देन आंध्र प्रदेश हला प्रोडक्शन, सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे decreasing order hela, UP, Maharashtra, then Tamil Nadu, then Andhra Pradesh. They are the 4 sugarcane producing states in India. The chronology is UP, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Answer देखियो चाहे बट के देखियो कौन हिची 67 देखियो, according to the data available at the time hela, the 4 sugarcane producing states in order the sugarcane producing as follows, that is first is your Uttar Pradesh, then Maharashtra, then Tamil Nadu, Andhra Pradesh, according to the your RBI 2020-21. The 4 largest sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu. ठीक अछि। देखो ए जो क्वेश्चन गुडा आछि एथि टिके अपडेट रहया को पड़ियो, कारण वेरी फैक्चुअल, and I would suggest to all of you every 6 months डाटा तमे अवेलेबल रहउची मिनिस्ट्री ऑफ साइट्स रे, सोडा कि तुमको अपडेट करे परियो हला। डोंट टेक इट एज एन टोटो, एवरी 6 months there is a change. I never suggest to the students to गोटे ईयर बाहरला पुनी आ गोटे ईयर तुम चेंज करो, नो। in fact in जदि तुमर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट भी आछि, then you can also be revamp the your choices also, because ministry they changes way, and of course though it is available in site also, you can go for that one. Mostly change हुए नहीं, किंतु देखी दबा का अपडेट रे। 68 number question, consider the following statement. Molasses is a byproduct of the sugarcane productions. Just 1 second. Okay. Is a byproduct of the sugarcane production. बिल्कुल molasses माने कौन रे? गुड़ सर। हाँ गुड़ गुड़, very good. जागेरी गुड़ को आजे, molasses भी गुड़ा को आजे, there is no problem है ना। जागेरी भी गुड़, molasses भी, this is correct. Baggage obtained from sugar mills includes, कौन कहले सर? जागेरी जो गुड़ तार गोटे सोप टाइप रो सेटा गोटे काटी हेई दिए। हां सेटा गोटे माने बेसी सॉलिड फॉर्म रे थाय जागेरीटा, मोलासेस टिके सेमी लिक्विड टाइप रे थाय, आ तमरा जागेरीटा टिके सॉलिड फॉर्म रे थाय। मत कि आज पन गोटे डाउट की अछि, मत टिके डाउट क्लियर करेबो। हां पचारी भी क्वेश्चन कुहंतु सर। यस सर। गोटे हमर गुड़ आमे नो सुगर केन गुड़, चीनी गुड़ कहंती, आ गोटे कालिया प्रकार गुड़ आसे जोटा कहंती खजूरी गुड़, मोर जा मन पड़छि खजूरी गुड़। कोन आ भितरे फरक कोन थाए? थाए ना गुड़ गोटे प्रकार आसे पूरा पूरा चीनी भले, आ गोटे आसे खजूरी गुड़ केमती, गोटे येलो कलर आसे, गोटे ब्लैक कलर आसे। यस 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 सर एटा अधिक प्यूरिफाइड फॉर्म जोड़ा येलो कलर टा, बट ब्लैक कलर टा एते भी प्यूरिफाइड न सेत पे। व्हिच वन इज गुड?
Sir, Black both one. Sir, black Black. one is Black color, sir. Due to more iron content. न्यूट्रिएंट कंटेंट ब्लैक रे थाए वेरी गुड yes हला sir. माने टिके जदी हम कहबा सेटा रॉ फॉर्म रे थाए हला आ एटा थाए कोन ए टिके अधिक रिफाइंड फॉर्मेशन हे है हला तो से जो देखियो ब्लैक टा जोटा कोहा जे सेटा के दामी थाए और सेटा पार्टी को टिके मीठा और कसालिया लागे टिके मार्क करथिबे हला सर रिफाइन ପାଇଁ सल्फर यूज है ना सर? नहीं सर ब्लैक टा दामी न था ब्लैक टा टे कम प्राइस था नहीं 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 ब्लैक टा कम प्राइस थे सर. ब्लैक टा कम प्राइस था बिल्कुल ब्लैक भी टा नो कम प्राइस था ब्लैक टा बेसी Yes sir. Black ଟା ଅଧିକା ଥାଏ। Black ଟା ब्लैक कम टा प्राइस है। है ना ब्लैक टा अधिक थाए सर- एटा कम थाए एटा तो Sir, मार्केट जो sir, reason con- production होची सेही Sir, के कम ITR था but देखो आईटीआर गंडमुंडा पाखरे से स्टोर टा अच्छी सर तयारी होची एबे हाँ सर लोकल आईटीआर गंडा मार्केट आगो रे पड़े ब्लैक टा बकरपुर कम सेठी तयारी होची स्टोर बट बड़ा अच्छी अपन मार्केट रे मते कोन तो फाइन प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल ना जोटा Fine. रॉ प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल ताब से अनुसार Fine, दाम sir. टा से अनुसार हो fine sir. ओटा raw फाइन product. हला फाइन इज इजीली अवेलेबल सिंस इट इज इजीली अवेलेबल ता माने सप्लाई इज मोर मींस प्राइस इज लेस डिमांड इज लेस मींस प्राइस इज मोर सिंपल सर एक्चुअली कलाहांडी साइड रे जेते प्रोडक्शन हुए तो सेठी ठीक ठाक रेट रे माने मिनिमल रेट रे मिल जाए बट एठी किंतु आसले Okay. अधिक रेट है से दिन सटा आई एम टेलिंग इन द ओवरऑल हला ओवरऑल एनीवेयर यू गो इन डिपो जेमती कटक रे मालगोदाम अछि हमर एठी आउ सेमती भुवनेश्वर भी यूनिट फॉर बट मैक्सिमम देखियो जो फूड माने फूड स्टोर हाउस जोटा कि सब जगह को डिप्लॉय हुए एई मालगोदाम एरिया रु ही सब जगह को जाए मोस्टली तो सेई जगह तमे देखियो कि गोटे जगह रे जेमती जोटा कहंती कोन तमरो मेन माने सेंटर मार्केट जोटा पर्टिकुलरली तो सेई जगह तमे देखियो यदि एक्चुअली मार्केट रे देखियो फाइन प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल एटा बहुत रेयर अवेलेबल है हला सप्लाई इज लेस सो प्राइस इज मोर अच्छा ठीक अछि ओके वेरी गुड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन Sir, ऑल ऑफ यू सर गोटे मिनिट सर गोटे गाँ सर हमर गुड़ाकरे जो बेसी रिफाइनिंग मिले ପାଇଁ सर सल्फर यूज हुए ना सर? ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्लियर सर बट मोस्टली मते लागु छै सल्फर यूज हेते पड़ता है आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट ओके ओके सर. ठीक अछि कैन यू शेयर योर आइडिया इफ यू आर नियर बाय जदी किछि अछि हाटर जानिथबे सर ओके आउ कोन की क्वेश्चन पचर छथि से मु कहली कि से कळा गुड़ाक बेसिकली गाँ एरिया गुड़ाक बेसी मिले टाउन गुड़ाक हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कारण गुड़ा तो सेठी बना जाए ना मैक्सिमम गाँ रे जे देखिबे तो गुड़ तो गाँ रे भी देखा जाए इनफैक्ट मु भी तो देखि छी हमर सेपटे भद्रकाड़ सेपटे बना हुए गाँ रे सेपटे बना हुए आ बहुत टेस्टी लागे से गुड़ सब very raw form माटिया रे मोर की सेवन करन सर नयागढ़ रे बेसी गुड़ तयारी हुई नायगढ़ रे गुड़ तयारी हां एवरी विलेज सेमिति यार गाँ टाउन कथार किछि वैरायटी नाही टाउन रे कंट्री भी साइड रे बहुत मेनली माने तयारी एबे आसिलानी कोन माने कम्युनिकेशन पे प्रॉब्लम ही जाउछि ना सिट से सेटी कर टाउन भी अवेलेबल अछि से तो ई जो कहजन गाँ रे तयारी छिटा पूरा त जीएसटी फीस सब लगी चलेन दादरे ट्रांसपोर्टिंग रे से भी हम माठिया पाटिया आसुनी बे टिनो रे आसुजी पैक हेकी ए इंटीरियर विलेज रे भी अजी पर्यंत भी तयारी होची गाँ रे सेमती बिल्कुल हां बना सेटा वर्नाकुलर रे आसी जीवो दिन छोड़ागो आगे सीजनल रे यस सर okay okay thank you all of you bartman dekhiba baggage is obtained from the sugar mills and is used as a fuel in the boilers to generate steam in sugar factories baggage mane jodi dekhiba ame chedata hala is used as a fuel in the boilers to generate the steam in sugar factories absolutely correct hala bartman jodi dekhiba UP au उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल से गवर्नमेंट वर्तमान बायोफ्यूएल इथानल प्रोडक्शन पाई भी हला दी प्रकार जिंस पाई इथानल पर क्विंटल पिछा चासी मान को पैसा दिया होछ वर्तमान आगुरु से एमती फोपाड़ी दउतले गाई खाया पे वर्तमान गोटे माने गोटे सरू पत्र भी पड़ी जायतले से गोटे की नहीं आउचंती हला they are so motivated and thanks to the Indian government that it is an upgradation of your particularly सुगर केन सेक्टर्स रे बहुत अपग्रेडेशन हेची पर्टिकुलरली हला माने गोटे बा छिलका भी पड़ले सन गोटे की नहीं आउचंदी बिकॉज़ दे आर गेटिंग एनफ रेन्यूमरेशन पर क्विंटल इट इज गेटिंग as the bio for the biomethanol production is also fuel and also as your जो सुगर फैक्ट्री भी तमरो स्टीम जनरेट पाई हला हीट प्रोड्यूसर सो बोथ हला
it is the statement correct 1 and 2. Sugar can only be produced from sugar cane as the raw material. ना बिल्कुल भी no, it is only लिखला इटा भूल है sugar can only be produced from sugar cane as the raw material. it is only लिखला इटा भूल है so statement 3 is wrong. So 1 2 is correct. Sixth line देखिए. What are the significances of a practical approach to sugarcane production known as sustainable sugar initiative? क्या भितरु? Seed cost is very low in compared to the conventional method of cultivation. Seed cost is very low. Sustainable sugarcane initiative. Sustainable sugarcane initiative re seed cost is very low in compared to the conventional method of cultivation. Absolutely correct. Very low. Sustainable. Drip irrigation can be practiced very effectively in this. Yes, this is correct. There is no application of chemicals and or inorganic fertilizers at all in this. No applications of chemical or inorganic fertilizers at all in this. Bilkul be wrong. No application. No application. It bilkul be no. Wrong. The scope for intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. Because the scope of intercropping. I'm sorry. The scope of intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. This is absolutely correct. Intercropping is more scope ta thai. Because bartaman tomorrow various minerals, suppose co time re nitrogen hela co time re हमको phosphorus content बेसी दरकार co time re हमको particularly nitrogen, phosphorus or magnesium hela एटा को समान rotate करो थांते. So intercropping is more required while and one crop is there because it retains or it enhances the soil fertility as well as the your micro bacteria जो माने थिबो हला से माने leguminous plant लगे भी से माने को भी recharge करा जाए. So there is because of your modernization of agriculture and thanks to our agriculture team that they have given impetus to the the productivity. When I mean productivity means the particular hectare production picture. Se mane tangara research और scientific explanations पाई there the India रे वर्तमान बहुत ही ज़्यादा हमको इटा beneficial सोची है ना. And thanks to this research team they have added and they are educate the farmers and of course there several branches are opened in the district wise also. This is not in only one state. This is the government particular request which is sub state manan. So we can say this is an this is an we can say an decentralized approach that government has adopted and instructed to the state's mechanism body also or state institutional body also. So statement 1, 2, 4 as correct. So V for Bombay. Next देखिए 70 numbers. Sucrose content in sugarcane decreases कौन पाई देखिए. If high rainfall occurs during the period growth of the plant, बिल्कुल भी कुछ link नहीं. कहीं कि sucrose content decrease करूँचे, है ना? If frost occurs during the period of ripening, okay. If there is fluctuation in temperature during the period of growth of the plant, okay. If there is a high temperature during the time of ripening, बिल्कुल भी no. बर्तमान रहेला ए दीटा भीतरे. Frost और fluctuation in temperature, है ना? देखिए most appropriate sucrose content कहीं decrease कुछ answer is B for Bombay, है ना? B for Bombay. ठीक है जी. Frost occurs during the period of ripening, so B for Bombay is correct. तो frost करेंगे कौन सा? Frost content इतनी पे हेले माने frost actually कौन पे हुए? देखन दो. सुगर केन रे प्रोडक्शन पाई मुझे कहली सुगर केन रे प्रोडक्शन पाई
पर्टिकुलर जदि हम देखिबा सुगर केन प्रोडक्शन रे दीटा जिंस दरकार गोटे हला ह्यूमिडिटी है नंबर 1 नंबर 2 योर adequate temperature और सनसाइन है कहीं सुगर के निजे ट्रॉपिकल क्रॉप्स फ्रॉस्ट माने जो कुआपथर माड़ हुए अनेबिन सेटा कौन करे सेटा अब्रप्टली तार जो पर्टिकुलरली जो जेनेटिकल पैटर्न टा जो बढ़े शुक्र माने सुगर केन रे सेटा दिले वर्षाटा हुए माने गोटे दिन हला 2 दिन हला 7 दिन हला 15 दिन हला हाई पूरा डैमेज कर दो ता ग्रोथ को है सो वर्तमान जो एग्जामिन करके देखाई रिपोर्ट अनुसार फ्रॉस्ट जोटी माने कुआपथर माड़ हुए खास करके पर्टिकुलर योर बिहार यूपी वेस्ट बंगाल देखा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रे भी है तो जो भी तुम यही प्रकार फ्रॉस्ट कंटेंट वर्षा होची जोटा कि तुम तार ग्रोथ को डैमेज करची है सुगर सुक्रोज कंटेंट तुम डिक्रीज करी जाउची दिस इज एज पर द सर्वे रिपोर्ट सर ओके 71 नंबर देखो मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर की मेजर ऑयल सीड्स सीसम मस्टर्ड ग्राउंडनट सीसम मस्टर्ड ग्राउंडनट सोयाबीन सीसम माने कौन रे ओडिया रे कौन कौन दे राशि सर राशि राशि से सर राशि सीसम को जाए राशि को जाए और ताकू भी अलगा ना भी रेपसीड भी को जाए मन रखन हला रेपसीड भी को जाए यस सर हला रेपसीड भी को जाए केते प्रकार राशि था इंडिया रे दुई ब्राउन दी प्रकार मेहनत है जोटा कि हिंदी रे कौन थी तिल तिल थिला दी प्रकार गोटे हला व्हाइट आ गोटे हला ब्लैक हला मन रखन तो एटा टू टाइप्स ऑफ तिल सीसम और रेपसीड एटा सब मन रखन हला दिस आर द सेम सिनोनिम्स आई एम टेलिंग तिल व्हाइट एंड ब्लैक दिस आर द हला ब्लैक टा बेसी मिले व्हाइट टा टिके कम अच्छा which of the following options represent the correct decreasing order of the production of the above oil seeds हला प्रोडक्शन रे above oil seeds रे सबटु की करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर हला डिक्रीजिंग ऑर्डर जदि हम देखिबा ऑफ कोर्स एटा ही बेसी सोयाबीन ग्राउंडनट मस्टर्ड एंड सीसम 4 3 2 1 सोयाबीन देन ग्राउंडनट देन मस्टर्ड सीसम टिके देखि देबा बेसी भल रहइबो 71 जदि मु देखुची 71 ने देखुची 71 नंबर जो देखुची सॉरी 71 जदि मु देखुची मेजर ऑयल सीड की के सोयाबीन 2019-20 प्रोडक्शन जदि देखिबा सोयाबीन अछि 101 अराउंड हला लाख टन्स ऊपर जदि जिबा सोयाबीन ग्राउंडनट 91 सीसम 7.50 रेपसीड एंड मस्टर्ड हला जोटा कि तमरो होची 112 रेपसीड आउ जदि हम देखिबा ग्राउंडनट होची दैट इज 100 सिस्टम गोटे ब्लॉक रे अछि रैपसीड गोटे ब्लॉक रे अछि तो कोन एठी रैपसीड अलगा कि सिस्टम टू गोटे मिनिट मुटे देखुची सोयाबीन देन ग्राउंड देन सर एटी कोचे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर रे तो हाईएस्ट मस्टर्ड अबव देन सोयाबीन just a minute but a second hold on to देखो सोयाबीन ग्राउंडनट आई एम श्योर सोयाबीन ज्यादा अच्छी देन ये अच्छी और रिगार्डिंग दैट वन लेट्स 71 टा मु नोट करली हला 71 क्वेश्चन टा को मु नोट करली आई विल कीप इट एज होल्ड हला नेक्स्ट ईयर मु सेटा कहि दउ हेलो सर हां यस कोन मैडम सर रेपसीड ता मस्टर्ड ता सिमिलर सर बोलना रेपसीड ता मस्टर्ड ता गोटे
रेपसीड मो जदि देखिबा मस्टर्ड आउ जो रेपसीड आउ एटा जो लिखा हिची हैला से समम आउ सर सिमन करना जेनस तो सेम सर स्पीसीज टा खाली डिफरेंट से बोथ बिलोंग्स टू ब्रासिका नहीं मु बुझिली सेटा आपण ठीक कहउछंदी कि मु जस्ट कहउ जोतले रेपसीड आउ से माने डिफरेंट माने गोटिए फैमिली रो पर डिफरेंट टाइप्स रो वैरायटी हैला तो से जदि हम सीसामम आउ रेपसीड जोटा नबा सेटा किछि माने भूल नै बट थिंग इज दैट हमको वर्तमान देखिया छि क्वेश्चन कोन पचारछि क्वेश्चन पचारछि चारटा रे या भितर तमरा मस्टर्ड टा देइनी हैला मु गोटे काम कर चाहि होल्ड दिस क्वेश्चन हैला नेक्स्ट क्लास रे विथ डिटेल सर एटार सर आंसर एटा अब 3421 अब ग्राउंड नट रॉयल प्रोडक्शन टा ज्यादा सोयाबीन को ठीक अछि सर मु कहली 71 टा मु होल्ड उछि नेक्स्ट क्लास रे मु टोटल विथ डिटेल फिगर आई विल टेल यू दिस वन हैला अपडेटेड फिगर वन सर सिंस मस्टर्ड देइनी और सित्री एनालिसिस रे मे बी एंड प्रिंटिंग एरर सो विल डिस्कस दैट वन ठीक अछि 72 numbers देखियो with reference to the pulse production in India है ना reference to the pulse माने pulse actually no pulses सेटा हबो है ना बोले एस्टा छाडी जे pulses production in India consider the following statements black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop black gram माने कोटा कि सर मुगो सर बीरी सर बीरी मुगोटा ग्रीन ग्राम वाला मुगो ग्रीन हैला इटा हला मुगो ठीक अछि बीरी हैला इटा ब्लैक ग्राम कल्टीवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप बिल्कुल ठीक कहबा ब्लैक ग्राम दिटांगो हुए हमें निजे देखि दियो सु गारे सब दिटांगो हुए हैला बीरी और मुगो नेक्स्ट green gram alone accounts for nearly half of the pulse production bilkul bhi bhul in the last 3 decades while the production of kharif pulses has increased the production of rabi pulses has decreased hala kharif pulses se increase hiche na bilkul wrong statement only one is correct ठीक है देखि दबा बेटर कोन दै छी सर रबी खरीफ बोथ इंक्रीज है सेटा ओनली वन Urd jodi nabi urd is a tropical climate crop it is a kharif crop in north india la urd है kharif crop in north india both in rabi and the kharif season urd माने कोटा सर उरड बोलते हैं उरड सर सेटा जोटा की कहा जाए अरहर भी कहा जाए हरड़ डाली हम जोटा ओडिया रे को हरड़ डाली यस सर नो सर नहीं सर उरड डाल जोटा सेटा उरड नो एटा तमे बैटर बनावा पे जोटा यूज करंती दैट इज उरद दाल बट हरड़ रुचि जोटा अपन इडली रा बैटर जोटा में पिठा बनावा पे जो यूज करन दैट इज उरद दैट इज ब्लैक ग्राम बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट हरड़ दाल जोटा की हमें दाल करके खांती yes this urad is like making pitha jota ke apna mane dosta banaila ba idli banaila that is the urad dal it same black gram biri urad mane yes sir same black gram is again the urad dal okay thank you I was not mane सर हरड़ डाली को कोनती हरड़ डाली को कोनती उरद दाल tur yes very good अरहर दाल भी कहते हैं yes sir tur datal mane tur हैला तमरो हरड़ डाली और अरहर जोटा को हिंदी रे जोटा अरहर यूपी साइड रे हैला थैंक यू वेरी गुड urad is a tropical climate crop it is an kharif crop in north india both in rabi and kharif season बिल्कुल हैला urd कहंती माने इवन इफ तमे जदी कर्नाटक आडी जीवो से माने एटा को urd कहंती हैला बिरी production of moong in the year 2016 is 14% of the total pulses and the percentage remains around the same in other years also. Statement 2 is false. In the last 3 decades, there has been a marginal increase in the production of kharif crops, which is that of the rabi pulses has increased to 150%. Hence, statement 3 is also false. So we have detailed knowledge only. ठीक है जी rabi pulses ही सब बड़े भला हुए kharif का इतने हुआ. 73 number question देखिए. Though coffee and tea both are cultivated on the hilly slopes,
coffee and tea both are cultivated on hill slopes. There is some difference between them regarding their cultivation. There is some difference between them regarding their cultivation. In this context, answer the following statements. Con coffee or tea vitre in both the hill slopes. Coffee plant requires a hot and humid climate of tropical areas, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. Hot and humid climate, absolutely wrong. Pleasing climate. Bilkul bhi no. Hot and humid climate, bilkul bhi no. Coffee is propagated by seeds, but tea is propagated by stem, cutting only. Absolutely correct. So only 2 is correct. Answer 73 is B for Bombay. Please make a note of this. 73 is B. Okay. Coffee ra temperature man rakhantu eti mu kahi deuchi. Both require the hilly slopes. Hala temperature condition jodi dekhibe, tea ra tikke humid climate dekhi jibo. Humid pleasant. Hala tea humid pleasant. ठीक है प्लीजेंट क्लाइमेट মানে टेम्परेचर थिबो एटी कोन थिबो मेनली आ एटी कोन थिबो एटी भी प्लीजेंट टेम्परेचर हैला बट लेस मॉइस्ट ये कॉफी केस रे मन रखन देटा कॉफी केस रे हैला एटा टी केस रे स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट हो सर हाउ कम सर कॉफी टा ट्रॉपिक रे भी होय ना सर कॉफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दे दिला हॉट एंड ह्यूमिड बिल्कुल भी नो कॉफी इज रिक्वायर्ड प्रथम हैला कूल क्लाइमेट कोरापुट कॉफी एक्चुअली कूल ट्रॉपिकल क्लाइमेट हबा कथा कूल एटी मु गोटे जिंस रे रिजेक्ट करली एटी हॉट दे दिछि एटी कूल दबा कथा हैला कॉफी केबे भी हॉट क्लाइमेट हबनी यू गो टू द कोरापुट you go to the Mandya in Karnataka you go to the Gunnikupal you go to the Mysore you go to the Nilgiri there you find the coffees bagan you go to the Darjeeling you go to the Sikkim coffee kebbe be hot no mid gotiye point reject kali sir that is hot coffee is basically cool but detail out detail kahibi temperature requirement for the coffee is basically 16 to 20 degrees centigrade where in tea there hala coffee pai tea re tikke enhance mane 18 ru 25 degree पर्यंत भी coffee हेई परियो sorry 23 पर्यंत हैला coffee in fact even more less so it is जो hot दे देला 80 मु रिजेक्ट कर लिया को is it okay to everyone yes sir sir normally ideal temperature coffee पाएंगा तो 23 to 28 सर मु गोटे जिंस खाली एति कहबी स्टेटमेंट 8 ही रिजेक्ट हला हॉट कॉफी केबे भी हॉट रे देखा जाएनी ऑलवेज इट इज एन एलिवेटेड हायर अल्टीट्यूड रे ही हुए हिली दिस इज एन बेसिकली हिली एरियाज रे हुए एंड हिली एरिया इज एन अल्टीट्यूड एंड दैट दिस हिली एरिया फॉर द इंफॉर्मेशन इट कैन नॉट बी एन हॉट एरिया हला गोटे ट्रॉपिक्स रे मु से जो कहूची हला इनिशियली एनसीईआरटीज पढंतु समस्ते ठीक अछि इफ आई टेक एन एग्जांपल 0 to 10 degree centigrade or let's say tropic of cancer भितरे कि tropic of capricorn भितरे हला direct sun rays is different but there is an even altitude range suppose मु गोटे जगह नेली हला particularly केनिया रे माउंट लोगान अछि हला केनिया इज ट्रॉपिक इक्वेटर देखि जाईछि केनिया कोठी वेयर इज केनिया अफ्रीका रो ईस्ट कोस्ट हला इक्वेटर पास करछि इक्वेटर माने 0 डिग्री माने ठू अछि सेठी इक्वेटर माने कोन डायरेक्ट सनरेज पडुची हैला किंतु केनिया रे जो माउंट लोगान अछि सेठी ऊपर तमर ग्लासियर्स मुडुची माने बरफ पडुची हाउ इट इज पॉसिबल सर प्लीज गिव माय आंसर क्वेश्चन आंसर 0 रु डायरेक्ट डिग्री इक्वेटर पास करछि 0 डिग्री केनिया ऊपर सेठी पहाड़ ऊपर माउंट लोगान ऊपर बरफ पडुची हाउ इट इज पॉसिबल सर अल्टीट्यूड अधिक था बिकॉज़ ऑफ अल्टीट्यूड एब्सोल्युटली करेक्ट हैला ता माने एठी डिफरेंस आसिला हैला सारंकर आपन जो प्रॉब्लम होची कोठी फंडामेंटल्स रे कि केमिति कोटे ट्रॉपिकल जगह रे केमिति ठंडा आसीबन माने हॉट केमिति होबनी इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्सेप्शनल इज अल्टीट्यूड हैला प्लीज रीड एनसीईआरटीज हैला किछि नै बेले बेले कोन हुए ना हमें बहुत जिंस जानि दी तो छोट छोट जिंस टिके स्किप करि जाय
Shall I proceed? Yes, sir. Right. Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and introduced into the world of Old World? Which one of the following group of plants was domesticated in the New World and introduced into the Old World? Tobacco, cocoa, rubber. Groups of plants was domesticated in the New World. Okay. Okay, domesticated and introduced into the okay. It was previously introduced in the Old World and now it is domesticated. Okay. Tobacco, cocoa, rubber now. Yes. Tobacco, cotton, rubber, cotton, coffee, sugarcane. Rubber, coffee and wheat. अरे इटा तो बिल्कुल भी भूल डीटा है बने बिल्कुल भी. Cotton, coffee, sugarcane बिल्कुल भी नुआ. Domesticated Old World पे इतना New World. Answer it जब हमें देखिए it is A, tobacco, cocoa and rubber. ठीक है देखिए दो quantity answer दीजिए. Let's check. Cotton was cultivated in India since ancient era. Even in the Harappan era, evidence of cotton was cultivation is found. So is wheat. Wheat has been widely grown crop in India since the time immemorial. However, the tobacco, cocoa, and rubber came in India through the Europeans in the late medieval or the early modern time. Yes, definitely tobacco, cocoa, and rubber. All of them are originated from South America. Yes, absolutely correct. Brazil and your Venezuela, particularly tobacco, cocoa, and rubber. This process is termed as the Columbian Exchange. Yes, Columbian Exchange named after the Christopher Columbus. It was the widespread transport of the plants as an animal culture and human population technology diseases in the Americas West. ठीक है, so answer this one is very much correct because medieval time रही British माने Europeans माने India को नहीं किया था tobacco, cocoa and rubber. अच्छा, who can tell cocoa कौन हुए कि what is cocoa? Tobacco बुझी हो ची rubber बुझी हो cocoa कौन हुए? What is this? Sir, chocolate and cake making. Chocolate syrup. Chocolate, sir. Chocolate. Cocoa chocolate? कौन flavor? And dark chocolate. Dark jahvi. Yes, very good. It is dark. Cocoa production ने की बर्तन को countries गुड़ा समय majorly world lead करती. Brazil. Yes, Brazil. Brazil. Na. Ivory Coast. Yes, Ivory Coast. Very good. Ivory Coast, Nigeria, DRC के? Democratic Republic of Congo. Very good. Democratic Republic of Congo. यार आगुटे अलगा ना भी अच्छी कौन को आजे? Zaire. Very good. Zaire. You can pronounce it as an Zaire. Zaire गुटे आउ ना अच्छी की कौन आरे Zaire ही ची किस है Zaire? river. Very good. River को आजे. से river अलगा गुटे ना अच्छी की कौन था ना? Congo river. Very good. Congo. Okay. ठीक है जी. Next देखिए 75 number question. Among the agriculture commodities imported by India, which one of the following accounts of the highest imports in terms of value in the last 5 years? Yeah. That is your vegetable oils. You have to remember this one, vegetable oils. Agriculture commodities imported by India, following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years. Values last 5 years vegetable oils imports. ये vegetable oils रे बर्तन इंडिया maximum कोड मगुच vegetable oils. Ukraine. Palm Ukraine. oil. Palm oil. Indonesia. Indonesia. Palm oil particularly Indonesia, Malaysia. How would कौन आउची एपटो? Ukraine कौन आउची? Sunflower. Wheat sir. हाँ बहुत सारा इंडिया रे बर्तमान एक्चुअली कौन की इतने पॉपुलेशन हमर जति की प्रोडक्शन होची वर्ल्ड रे समान भी बहुत अधिक है बट हमर का कंजम्पशन इतने अधिक हमर तो we are forced to import that part. 76 देखिबा इट देखिए 75 रे देखिबा कौन होची इंडिया जे देखिबा
India is known to be the export of spices to the world. कितने नंबर क्वेश्चन थे लगी? 75. 75. India is known to the spices to the world. Some fruits we ship, while some food we export, but horticulture trade is not massive portion to contribute to our import bill. India has started importing pulses with long-term your contractual obligation in the past few years. India also produced quite large amount of pulses itself. Moreover, legumes are not very costly. Thus, logically, vegetable should be vegetable. India imports vast amount and various types of vegetable oil from many countries. India relies on imports almost 70% of its vegetable oil consumption. है imports माने हमारा 70% देखो 70% हमारा बाहर import to depend करछ. India's import bill vegetable oil has been surging from the past many years. खास कर कोविड टाइम रे बेसी बढ़ी गला. 76 consider the following statements. Maize can be used for the production of starch maize होगा. Starch माने कौन टा? Mondo sir, Mondo. Very good. Used for the production of starch. बिल्कुल. Maize माने कौन? Mocca sir. Mocca. Corn भी कहिबा, maize or corn. Oil extracted from maize can be a feedstock for the biodiesel. Yes, absolutely correct. Bartaman. Alcoholic beverages can be produced by using maize also. Yes, definitely. Because Yes, sir. कहीं fermented करा जाए, है ना? Fermentation रे हुए एटा. अरे हांडिया रु पुनी fermented करा है कि बनाउची ने चावल रु हांडिया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? So 1, 2, 3 is correct. 77. Sorry. देखिए, one of the aims of National Food Security Mission is to bring sustainable growth. Okay, fine. Then in cultivated land and cultivable land and productivity of some crops in selected districts. Which are these crops? Only rice and wheat. Food Security Mission, National Food Security Mission, sustainable growth by. So only rice and wheat, बिल्कुल भी नहीं. Only rice, wheat and pulses. Only rice, wheat, pulses and oilseed rice, wheat, pulses and 77 जदि हम देखिबा हमरो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टू सस्टेनेबल ग्रोथ में राइस व्हीट एंड पल्सेस को दिया जाई छी हला ऑइलसीड नो हला मन रखो बेटा राइस व्हीट आउ पल्सेस 78 देखिबा ए स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स किया भीतर को स्टेट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स 78 it is the northern part of arid and semi-arid area. Okay. It is in central part produces cotton. Okay. Cultivation of cash crops is predominant over the food crops. Yes, definitely. Northern part is arid and semi-arid. Definitely it a Gujarati होगा. ठीक है जी. गुजरात जदि मैं 80% नेबी इट इज ऑलमोस्ट गुजरात हला सेंट्रल पार्ट रे तारा कॉटन प्रोडक्शन हुए जदि देखियो काठियावाड़ा ए रीजन रे तमरो हुए हला ए रीजन रे भी हुए गुजरात हला 8% पर्टिकुलर मन रखन काठियावाड़ा जगह ए जगह रे मन रखंतु दिस इज कच्छ दिस इज काठियावाड़ा 8% नहीं हुए दिस इज सॉल्टी मार्शलैंड एठी दुएनी भूल रे भी एटा को करबेनी केबे भी हला दिस पर्सन एरिया जस्ट दैट इज व्हाई आई this draw the diagram. Right? So answer is Gujarat. 79 number question with reference to organic farming in India. Consider the following statement.
The national program for organic production, national program for organic production is operated under the guidelines and direction of the Union Ministry of Rural Development. National program for organic production is operated under the guidelines of direction of the Union Ministry of Rural Development. No. No. Then the Agriculture and Processed Food Products Export Development, APEDA, functions as the Secretariat for the implementation of NPOP. Yes, correct. Sikkim has become the fully organic state. Yes, 3 is correct. It is the wrong hour. 1 is then it is 79B. B for Bombay. B. Ministry of Commerce has implemented the national implemented policy. Agriculture Processed Food Products Exports is the implemented agency for the NPOP. APDP is established the Government of India under the Agriculture Processed Food Products Development Agency in 1985. Hence, statement 2 is correct. 2016 Sikkim is become the first fully organic state. 80 number question देखिए. In India, cluster bean, meaning guar, is traditionally used as a vegetable or animal food, but recently its cultivation has assumed significance. Thank you. Which one of the following statement is correct? बहुत बढ़िया question टा गुआर ପାଇଁ कौन होची? है ना? वर्तमान कौन होची? प्रथम आगु यूज होतला as a vegetable or the animal food ପାଇଁ, but recently cultivation has assumed significance. National level. कौन ପାଇଁ गुआर को निया हला? The oil extracted from seed is used in the oil extracted from seed is used in the manufacture of biodegradable plastics. Okay, no. The gum is made from its seed is used in the extraction of shale gas. Yes. This is absolutely correct. B for Bombay. Guar pai. The leaf extract of its plant has your properties of your anthocyanins, and it is a source of high quality biodiesel. जदि गुआर नबो बेस्ट जदि देखिबे हैला 80 जोटा कि नउची तमरो सेल गैस प्रोडक्शंस में इट इज देखि देबा द गुआर इज cluster bean is an annual legume मन रखो annual legume हैला legume रे आसी and the source of your guar gram मन रखो गुआर ग्राम जोटा अछि से जो पढ़े दिली गुआर ग्राम पे गुआर as a plant has a multitude of different functions of human and animal nutrition, but gelling agent or जो gelling agent mainly मन रखो गुआर contains seed in guar gram is today most useful. Demand is rising rapidly due to the industrial use of guar gram in the hydraulic fracturing of the oil shale gas. About 80% of the world productions occur in India and Pakistan. Guar pai. Shale gas pai are particularly used as gelling agent containing seeds. Most useful. But this is correct. Most गुआर कोडा सर गुआर कोडा गुआर ओडिया तुम जानि टिके मारि देबे सर गुआर जानि देबे एटा अच्छा अच्छा गुआर गुआर हां सर गुआर पर्टिकुलरली ओडिया रे सेटा तुम कहि परिबेनी बट टिके जदि मु कहिबी कि गुआर मारि देले बेटर हमर एपटे चासो हुए सेटा कोडा को जे तको ओडिया रे ये सर छोटो छोटो गुआर ही तो कहंती सर वेजिटेबल सा गुआर तो टिके पित्ता टाइप्स लागे बीन्स टाइप रे देखा जाय माने मुर्गी गुडी के छोटो छोटो ना पूरा चिपकी के थिबो ना फ्लैट से एरिया अनुसार ना भिन्न भिन्न सर तन एग्जैक्टली मु से गुजा नाटा एक्चुअली भिन्न भिन्न एटा एक्चुअली से जूम कहले हम की तको हम गंजाम रे सर सब आगे गंजाम रे ओडिया रे गुआर बोले को सर गुआर सेटा गां रे मिले से जो छुआ बेले जो गुडी तयारी करंती ना गुआली कोली हां यस 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 बुझी पाले हमर गुआली छोटो छोटो मांची छुई को हमर एपटे भद्रक रे तको अलगा गुडी की प्रकार छुई कहंती तको हैला एटा अलगा टाइप रो सेटा देखंतु इन प्लेसेस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट नेम बट जदी मु कहबी टिके इमेज मार देबे गूगल ले तो देखिले सेटा फटने क्लियर हे जो ये सर गुआर सेटा आसुची सिम्बो नो है सिम्बो नहीं गुआर जोड़ा आसी बाजार रे अवेलेबल एक्चुअली सेटा किछि भूल नो सेटा जो कहले सिम्बो ना सेटा बहुत जगह सिम्बो भी कहआ जाय सेटा एक्चुअली सिम्बो जातीय सिम्बो जातीय सर सिम्बो तो आउडा से झट्टा कहबे हम सर आपरो सेपटे सिम्बो कहंती
Okay, okay, ठीक है जी, very nice. जोड़ा Next देखो कौन 81 number. Actually see seed जातीय different places having different name in district wise, है ना? ठीक सर है कवर देखिए की सीटा मैडम मु कहले से डिफरेंट जगह डिफरेंट सेटा ता नाटा अलग अलग हैला माने ईस्टर्न ओडिसा रे अलग गुगल कर दियो देखा जाउची मिलिबो महाराष्ट्र क्लस्टर महाराष्ट्र बिन मार कवर देले कौन पळे सी आसी अरे एते रिसर्च करंतुनी जेतिकी दरकार सेतिकी करंतु बस यस which one of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rocks as most important of rock systems in India हैला जदि हम देखिबा which of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rocks as most important rock system of India? Gondwana rocks, very बहुत बढ़िया question. कौन है appropriate reason for considering Gondwana rocks as most important rocks? ता माने question एटी पचाला Gondwana rocks को काहे की most important कहा जाए हैला कौन देखिबा more than 90% of the limestone reserves on India are found in them. बिल्कुल भूल. More than 90% of India's coal reserves are found in them. यस सर More than 90% of the fertile black cotton soils are spread over them. Bilkul bhul. None of the regions giving the appropriate no. Eta bhul. Answer is B for Bombay. India re jitti ki amar coal miluchi maximum hela Gondwana coals. More than 90% are Gondwana coals. Hela Gondwana coals. ठीक है जी. Next देखिए 82. At the present state of our knowledge and resource position, India will remain self-sufficient for the next 3 decades in Uttare. India self-sufficient hoga. Tin, cooking coal, copper, petroleum. बिल्कुल इटा तो भूल बिल्कुल भी. Answer is your cooking coal. काहेंगे remain self-sufficient. काहेंगे इंडिया रे जो हमर कोल मिलुची गंडवाना कोल जोड़ा मैक्सिमम हमर बिटुमिनस रो लो ग्रेड हला आउ लिग्नाइट वेराइटी हला लिग्नाइट एंड बिटुमिनस रो लो ग्रेड ता तो जोटा की मोस्टली कुकिंग कोल ले यूज करा जाय से जो को जो छी जो हमर 3 डिकेड्स आछी हला पोजीशन इंडियन लेवल इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स में इट दिस इज कुकिंग कोल इज करेक्ट 83 नंबर देखिबा विथ रेफरेंस टू two non-conventional energy sources called coal bed methane and shale gas है ना coal bed methane and shale gas consider the following statements कौन कौन क्वेश्चन देला कि एटी भला भी पढंतु coal bed methane and shale gas है ना कौन देछि पढिबा चलन देखिबा नॉन कन्वेंशनल है टू नॉन कन्वेंशनल कौन कौन coal bed methane is the pure methane gas extracted from the coal seam pure methane gas extracted from the coal seam while shale gas is a mixture of propane butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks. Absolutely correct है ना coal bed methane is pure methane gas जोटा कि हम extracted from the coal seam है ना जोटा कि ब्रह्मपुत्र बेसिन रू सेटा भी होची and in fact it भी गोदावरी बेसिन रू भी होची while shale gas जोटा कि मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from the fine grained sedimentary rocks. It is absolutely correct है ना please note it, this is correct answers. In India abundant coal bed methane sources exist है ना कौन होची in India abundant coal bed methane source exist but so far no shale gas source have been found है ना so far no shale gas have been found. तो 83 ना ठीक है এটা তো ভুল 83 যদি দেলা abundant coal methane source exists but so far no shale gas have been found. बिल्कुल ही no statement are wrong. Statement 2 is wrong. Statement 1 टिके देखिए दो 83 ना coal bed methane and shale gas are unconventional source of energy ହେଲା ଏଠି କଣ ଦେଲା क्वेश्चन ଟା ଏଠି ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ठीक ଅଛି unconventional source of energy इंडिया रे कौन होची
Coal-bed methane is 90% more pure from methane gas extracted from the coal seam. Shale gas is extracted from the fine-grade sedimentary rocks. अच्छा अच्छा okay okay. I'm sorry, 80 टिके मोर है ना टिके 80 ए जगह टिके करेक्शन करछु मु. Shale gas is not only a mixture of propane butane but also contain more than 86% of methane, ethane, propane and various है ना. 80 statement रे कोन होबो? It is not only the propane and butane एटी देला है ना. It is a mixture of propane and butane only. I have just skipped this one. It is only टा जो लिखि ना, this is wrong है ना. देखो हरिड रे पढ़ले एटी भूल हे जाय. This is not only एटा भूल ता सांको एटी कोन अछि. Apart from the propane and butane, this is also methane, ethane also is there है ना. Propane and butane संगे methane, ethane and खास करके methane 86% अछि, ethane है ना 84% अछि. So statement 1 also wrong. Answer is D for Delhi. Please make a note of this. देखो एटी गोटे छोटिया जिंसो only लिख देला बोली total टाइम भूल हे गेला है ना. Only because of this statement. Statement is correct. It छोटिया जिंसरा खाली से लिखि देला only, बस पूरा गलत statement है ना. In fact मु निजे फास्ट पढ़ देली. I just skip this one है ना. So be careful about this one. सबु जगह रे मु कहि दोची परीक्षा रे prelims रे मन रखंदो सबु चाहे UPSC हो कि UPSC हो जोठी भी हो जोठी only लेखु चंती सेठी से माने धीरे किना सेठी से माने निश्चय से क्वेश्चन ऊपर टिके पॉज मारी के रहि जो हैला. एटा मु कहूची सबु जगह रे. 85 number of questions. Consider the following statements. Balghat is known for the diamond mines. Balaghat is where? Balghat region is known for the diamond mines. बिल्कुल भी नो. छत्तीसगढ़ बालघाट के भी कॉपर माइन. Majgaona is known for the manganese mines. हैला बिल्कुल Majgaona is in diamond हैला. पन्ना रे पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. प्लीज नोट इट. Majgaona हैला पन्ना डिस्ट्रिक्ट रे मध्य प्रदेश रे जोटा कि डायमंड पाई फेमस. बालघाट बी मैंगनीज मिले. बालघाट रे बी कॉपर मिले मध्य प्रदेश रे हैला. सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. ठीक अछि. Yes, sir. Yes, sir. 85. Which of the following is not correct? Not correct. है ना. See, मैंने persistently I'm telling in class सबु जगह में गोटे जिंस कहूची कि पेन पेपर रे एग्जाम टा मु समस्त गोटे जिंस कहे जदी भी ऑनलाइन रे मोड रे डिफरेंट प्लेस रु की सर्विस की बहुत जगह पढ़छन सबु ठीक अछि. आई मु केबे भी मना कर. आई डोंट डिनाय. बट मन रखंतु आज भी एग्जाम पेन एंड पेपर रे जहां भी पढुचंती प्लीज मेक इट ए नोट और पेपर. फिजिकल टच इज वेरी मच नीडेड because exam ro practical situation ala sei exam oriented. You have to be physically touch whether it is prelims whether it is mains है ना. तो जे जिंसरा मु कहे कि काहे कि मु बार बार एटी मुंडली बुलुस बिकॉज़ आई नो एते मेहनत छुटिया हल्का भूल पाए टिके ई पाए हमर होई जो. सो दैट इज व्हाई मु सबले कहे कि सब बेले पेंसिल टा धरती हाथ रे एग्जाम देला बेले and you have to check it down. Douglas Steel Plant is the first integrated steel plant in the public sector of India. Was set up in the Soviet Union collaboration है ना. पूरा रॉन्ग. एटी ही भूल हे गेला. कोडी हितला कहां संग रहितला हमरो सर जर्मन वेस्ट जर्मन. इट इज जर्मन और जर्मन वेस्ट जर्मन आज के डेट रे मैडम कहबानी है ना. जर्मन इज नाउ इंटीग्रेटेड बट डिटेल रे जदी इंटरव्यू रे पचरंती यू हैव टू गो फॉर जर्मन फर्स्ट. जदी पचरिबे एट दैट टाइम व्हिच जर्मन देन यू हैव टू स्पोक दैट वन वेस्ट जर्मनी बोली है ना. ठीक अछि. Yes. Okay, good. Salem Steel Plant is a premier producer of the stainless steel. Absolutely correct. Maharashtra represents a subsidiary of the Steel Authority of India Limited. Yes. Visakhapatnam Steel Plant, Vizag, is an unit of the Rashtriya Ispat Nigam Limited. Absolutely correct. It is good. 86 number question देखिए. Consider the following statement. Petronet LNG Limited is setting up another LNG terminal at Mangalore. Petronet LNG setting up another LNG terminal at Mangalore. It's correct. The head office of the Dredging Corporation of India at Visakhapatnam. Visakhapatnam, that is correct. The
Narva Pahad mines is operated by the Uranium Corporation of India Limited. Absolutely correct. है So 86 जदि हम देखिबा, these are all are correct. 87 देखिबा, in India the state government do not have the power to auction on the in India the state government do not have the power to auction the non-coal mines. ठीक अछि? Correct statement दीजिए कि अभी तो correct. The state governments do not have the power to auction the non-coal mines. बिल्कुल भी नहीं. As per the concurrent list, state government do have the power. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. बिल्कुल भी बोलो. अनंतपुर आंध्र प्रदेश रे अछि. है ना? झारखंड भी वर्तमान मिल लानी जाय जोटा कि झाबुआ बिहार और झारखंड भी अछि. बोल. Rajasthan has iron ore mines. Yes, absolutely correct. Aravalli 3 is only. D for Delhi. है ना? 88. Which of the following have been accorded geographical indication status? क्या भी तो GI tag नहीं की. वाराणसी जौहरी एंड साड़ीज बिल्कुल. राजस्थानी दाल बाटी चूरमा. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Total. राजस्थानी दाल बाटी चूरमा. देन तिरुपति लड्डू. एटा तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा जाई छी नहीं तो Total नहीं sir. 2 is not GI tag. नहीं ना दाल बाटी चूरमा तमरो हेरिटेज रे सेपट जाई बट दाल बाटी चूरमा तो जाई नहीं एज पर माय नॉलेज. देखि देबा द GI tag name has signed under the certain products which are specific geographical locations. Options Banarasi silk is there. Tirupati laddu is registered as GI नहीं है ना. दाल बाटी चूरमा नहीं राजस्थानी. अरे दाल बाटी चूरमा मु राजस्थान में देखि छी खाई छी कि ताटू तो भलो हम घर बने दउ छी. मते एते काय सेठी खास लागलानी सेमते. 89 देखियो. Consider the following pairs national highways and cities के भितरे. NH4 चेन्नई हैदराबाद बिल्कुल भूल है ना. NH सिल्क NH6 मुंबई कोलकाता. NH6 ना वर्तमान चेंज हे छी ना सब. NH15 अहमदाबाद जोधपुर. एटा सब जंग गलत. मुठी काई कहू छी वर्तमान मन रखंतु मु खाली गोटी जिंस कहि दउ छी. प्लीज नोट इट. हैला वर्तमान नितिन आफ्टर द अराइवल ऑफ श्री नितिन गडकरी के से हमर हु इज नितिन गडकरी. Transport minister. रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है. नितिन गडकरी सर आसला पर वर्तमान कौन हम नंबरिंग हैज चेंज्ड है. कौन है नॉर्थ टू साउथ. टू साउथ है इवन ईस्ट टू वेस्ट है तुमरो ऑड है. बेसिंग ऑन दैट एटा देखि नेबे सब रे एनएच रे तो सेही जंद्र सब जंका भूल करतबा. वर्तमान हमर जो माने हमर ओडिसा देखि जो NH5 जो नेशनल हाईवे 5 कोलकाता टू मद्रास है. वर्तमान एटा चेंज केते NH16 है. ठीक अछि. तो वर्तमान नॉर्थ साउथ इवन हे गेला आउ ईस्ट वेस्ट ऑड हे गेला. नेक्स्ट 90 with reference to the Indian transport system consider the following statements. कौन है ची ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो देखियो. The Indian railway system is the largest in the world. बिल्कुल भूल. Is the मोडी कौन नेली देखो देटी मु कौन करली the largest किए सबटु बड़ो किए USA largest railway system USA है ना. Second, national highways cater to 45% of the total transport demand. Absolutely correct है ना. National highways are the now lifelines for trade and commerce in India है ना.
then answer लिखियो starting करिवे एबळे among the states Kerala has the highest density of the surface road na among the states Kerala has the highest density of the surface road no Maharashtra ji I think national highway number 7 is the longest in the country ठीक है yes national highway 7 it is correct national highway 7 टा ठीक है देखिए तो नंबर पे सर 44 ना सर no not 44 होगा ना Sir, 44. the question has asked national highways scatter 40 to 45% total demand that is correct Maharashtra the highest मुझे ना Maharashtra la surface density national highway service number 7 is the longest national highway longest जीवो सेटा Sir, was longest लिखाई छी presently 27. कोड़ा मैडम National Highways number 7 was the longest, but presently NS 27. just gotte minute 1 second Sir, 27 टा गुजरात रू आसाम जाए कनेक्ट करछि ना सर gotte second sir सर 44 हो सर 4112 किलोमीटर सर जोटा कि हमरो NS 44 अच्छा NS 44 है सर बर्तमान एटी मु जदी कहिबी जस्ट आई एम मेकिंग ए स्मॉल करेक्शंस हियर एटी जो देइची नेशनल हाईवे 7 है ना इज द लॉन्गेस्ट एटी गोटे जिंसर टिके मु एटा रॉन्ग पूरा कहि परिबिनी किंतु दिस इज आल्सो करेक्ट आइकी NH7 जोटा हला ओल्ड NH7 बर्तमान एटा हे जाइची NH44 ठीक अछि बर्तमान हे जाइची NH44 जोटा कि तार लेंथ हला 3754 किलोमीटर 3754 किलोमीटर जोड़ा कनेक्ट करूची अगरु श्रीनगर टू कन्याकुमारी अगर जोड़ा कश्मीर कन्याकुमारी जोड़ा कहतले सेटाई एठी मु जदी कहिबी परीक्षा रे जदी एटा मु पूरा जेतु प्रैक्टिस सेट करछो हला सेटा को एते किछि माने ई करनी एठी ठीक दे दिस ठीक अछि किछि असुविधा नै एठी एक्चुअली समान प्रिंटिंग एरर बते हेछि ओल्ड टा लिखि ना ओल्ड टा लिखि ना हला ओल्ड एनएच किंतु परीक्षा रे जदी देथियो नेशनल हाईवे नंबर 7 बिल्कुल ताकू क्रॉस मारियो काहे कि प्रेजेंटली NH44 दैट इज नेम एज पर हला जोटा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी हैड इट बीन रिटन एज ओल्ड NH नंबर 7 एठी करेक्ट हे जांदा और परीक्षा रे जदी ओल्ड NH7 भी देबो तमे एटा को करेक्ट मारियो वर्तमान एटा NH44 जोटा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी श्रीनगर टू कन्याकुमारी जेते कि तार लेंथ हला 3754 किलोमीटर Is it okay now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड से 4112 किलोमीटर देछि सर देखो बोला विकिपीडिया रे को जगह रे कोटा देइथिबो हला आउ समाने 4000 जोटा देइचंदी मे बी आउ कोन करथिबो बट एक्चुअली एटा मु मिनिस्ट्री रिपोर्ट रू से जिंसरा डाटा टा मु कहूची हला विकिपीडिया रे तो बहुत जिंस समाने दे दोचंदी they may consider the sum of the towns or Google हिसाब रे दोचंदी एक्चुअली 3754 ठीक अछि और 10टा क्वेश्चन वेरी लेंथी क्वेश्चन अछि देन रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आई विल डिस्कस लेटर विथ अदर नेकी सो आज पे इति के हम रखु छु हैला ठीक अछि ओके देन Yes, sir. we'll meet up again Thank you, sir. thank you all of you and Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. and happy Thank and you, happy sir. Raksha Bandhan Thank you, sir. and good wishes to all okay thank you Sir. Thank you, sir. thank you bye bye